Guys, good evening. Let's wait couple of minutes for others to join in. फिर हम लोग start करेंगे. All right. So yeah, I think most of the students have joined in. Great. All right. So there are Sanidhya Agrawals. How many Agrawals are there, Sanidhya, today? I hope that's a typing error. You are an Agrawal, not an Agrawals. All right. Great. So now what do we have in store today is an assignment for you guys. So here it comes. Now what I've decided today is that we are going to डिस्कस द होमवर्क. मैंने आपको पिछले होमवर्क का वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं भेजा था बिकॉज आई wanted to, okay, for a change, do some discussion within the class itself. And now I know for a fact that some students would have struggled with the questions, whereas some students would have comfortably done it. So what I'm going to do now is I'm going to share an assignment based on what we had done in the last few classes. ठीक है? The assignment is above average difficulty. ठीक है? ऐसा नहीं है. For you guys currently, जिस difficulty level पर आप हो,
I would say that it is above average difficulty. So group per, I am going to share this assignment, and let me see कहाँ पर गया ये. Yep. So as soon as I get logged in, I will share this assignment on the group. And in the meantime, जो मैंने last class में आपको homework दिया था, let me quickly copy paste that homework. What was that homework? Yep, this was the homework that I had given to you in the last class. इस homework के ऊपर I will have a discussion with you guys. All right. Okay, I have shared the assignment on the group. Let me know if you guys have received it. So जिन जिन को doubts नहीं है वो उस assignment पे work करना शुरू करें. ठीक है. As I said, above average difficulty level questions हैं. So let's see if you are up to the challenge. And बाकी जनता मुझे अपने doubts बता दो from the booklet. ठीक है. So let me open the booklet also in parallel. Not the booklet as well. So सबसे पहले let me collect the doubts from the FBO section. ठीक है. FBO section में I had given you questions from 26 to 44, right? So in the FBO section, do you have doubts which you need to clarify? हाँ, so अनु ने भेजा है 37 and 44. ओके. रुद्र, तुम्हें एफबीओ में डाउट नहीं है? तुम्हें क्या सब्जेक्टिव से इस नफरत है क्या? सख्त नफरत. मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने नहीं है. आई एम एन ऑब्जेक्टिव पर्सन इन लाइफ. I will only do objective questions. My thought process is objective. All right. So 37. Which of the following contains the largest number of atoms? And इसमें you are being asked about or you are given these options. So इसमें आपके पास option यही है. आप one by one करके जाओगे. ठीक है. So 37 में you are saying that you are getting an answer of A option. Well, A option कितना आ जाएगा? A option should come out to be, let me snip it in. Okay. So A option कितना रहेगा? 1 milligrams मतलब 10 की power minus 3 grams. ठीक है. That is the mass divided by the molecular weight, which will be 58. ठीक है. 4 into 12 plus 10. And this will be the number of moles, then multiply by Na will be the number of molecules, and then multiply by 14. This should be your number of atoms.
whereas D option should be 1 ml means 1 gram of water divide by molecular weight, ठीक है, into Na into 3, ठीक है, water is H2O, so 3 atoms per molecule, and 1 ml, because density of water is 1 gram per ml, so the mass will be 1 gram. So I think maybe the careless mistake that you made is here, most likely. Is that clear now, Anu? नहीं, लीटर्स में क्यों कन्वर्ट करना है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml ना, तो 1 ml इज 1 ग्राम, ठीक है. देन 44th क्वेश्चन, ठीक है. सो अनु ने भेजा है 44th क्वेश्चन. लेट मी, ऑलराइट, सो ठीक है, it is not a bad question. Let me bring that question over here. All right, now इसमें कैसा होगा? A chloride of a metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density is 50. So अब ठीक है, एक ही सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है. There are numerous ways to solve a question. Simple, one of the ways, ठीक है, I would not even say that it is the simplest way, but it is one of the ways, ठीक है. Let the metal chloride be MClX, ठीक है. So now if you take percentage of chlorine, it will be 35.5x, that is the contribution in the molecular weight, upon the molecular weight, which will be m plus 35.5x, okay, I am letting m be the atomic mass, into 100%, or in fact you don't even need to put that, you can just simply say that, okay, let me actually solve it in a different manner. So if percentage of chlorine is 71%, so this implies percentage of metal kitna ho gaya? 29%, right? Now by the formula, percentage of metal should be 1 into the contribution atomic weight of m, that is in the molecular weight, upon the molecular weight. Molecular weight will be 100. Why? Because this will be twice of vapor density, and यहाँ से आपको ये वैल्यू क्योंकि 29% दिया हुआ है, you will get the value of m as 29, ठीक है. So आप ऐसे भी कर सकते हो. This is one of the ways, ठीक है. Definitely there can be many other ways. All right, then आयुर ने 42 भेजा है. All right, so let me take 42. 42 is something similar to our class example ना आयुर. इसमें आप ऑब्जर्व करना, in 42 you need to just understand that the loss in weight is because of the evaporation of water, right? So percentage of water अगर आप निकाल लोगे, that will be your percentage loss in weight, and this would be equal to 10 into 18, that is the contribution of water in the molecular weight upon the molecular weight. Molecular weight कितना होगा? 2 into 23, ये सोडियम हो गया, then 32 सल्फर हो गया, 4 into 16 ऑक्सीजन हो गया, and then 10 into 18 ये आपका वाटर हो गया. तो ये मोलिकुलर वेट हो गया into 100%. That will be your answer.
Now go ahead and solve for it. ठीक है? I hope you are not making calculation errors. और अगर आप कर भी रहे हो तो I hope then your expectation is not that कि मैं आपको calculations भी अभी करके दिखाऊंगा कैसे होंगी. ठीक है? All right, so I hope this clarifies your doubt, Ayur. Then Ravi has 29 and 33 of FBO. All right, so 29 कैसे work कर रहा है? How many molecules of H2O are contained in this much amount of Na2H2O3? Okay, so ठीक है, मतलब मैं solve तो कर देता हूँ, but would be interested in knowing that where is it that you got stuck? Because it goes in the same manner. A formula plus logic, mass of whatever the compound is, अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा सा compound है, is 2.48 grams. So moles of whatever this compound is will be 2.48 upon molecular weight. अब I hope आपको molecular weight लिखना आ गया. ठीक है, so 2.48. अब molecular weight कितना होगा इसमें? सोडियम के 2 एटम्स हैं, सो 2 into 23. सल्फर के भी 2 एटम्स हैं, राइट, सो 32 into 2. देन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 3 into 16. एंड देन 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 into 18. सो यू विल गेट द मोल्स. ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इटसेल्फ कम्स आउट टू बी 248 ओनली. ठीक है, 2 into 23 plus 2 into 32 plus 3 into 16 plus 5 into 18. Yeah, it comes out to be 248 only. So ये 1/100 हो गया, right? So number of molecules of whatever this is, ये कितने आ जाएंगे? 1/100 into Na. Now as you can see, अब लॉजिक लगेगा ना, that एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? सो Na/100 में कितने molecules आएंगे? So you will get your answer as Na/20. So this will be 6 into 10 की power 23 upon 20. So you can approximate it थोड़ा सा. You will look at the options. Options are also in this manner. So you will get your answer as 3 into 10 raised to the power of 22, right? Which makes the option as the correct answer. ठीक है? All right, then एक और कौन सा डाउट आपने पूछा था? 33rd. Let me come to 33rd. Okay. So I think ये valence electron वाला question था, right? So इसमें आप observe करना, nitrogen atom has 5 valence electrons, so nitride ion will have 8 valence electrons. 5 plus 3, that is 8 valence electron each nitride ion. So इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Mass of N3 minus is 4.2 grams. So moles of N3 minus will be 4.2 upon 14, right? And number of
nitride ions will be equal to 4.2 by 14 into Na. अब इसके बाद में लॉजिक लगाना है that nitride ions, sorry ये तो मैंने azide ion लिख दिया, nitride ion and number of valence electrons. So each one has 8 valence electrons. So how many are going to be there in 4.2 into Na upon 14? So you will get your answer as 8 into Na upon this should be into 3 by 10. ठीक है, so according to match the option and you will get to know. ठीक है, right, this comes out to be 2.4 Na. ठीक है, so I think FBO is done. अब मैं FBS के questions ले लूं. FBS में Ayur has sent some questions 11, 13 and 15. All right, so let me come to the 11th question. Oh my god, but I don't want to do this kind of question. How many years would it take to spend an Avogadro number of rupees at the rate of 10 lakh rupee per second? So it has nothing to do with chemistry. It is more of math. It is more of logic, more of reasoning. Well, essentially everything is maths, but this is like really simple math. Okay, so यहाँ पर देखना that you have to apply unitary method. ठीक है, so you have rupees and you have time. ठीक है, so 1 second you spend 10 lakh rupees. 10 lakh rupees means 1 million actually. So 10 raised to the power of 6 rupees. So if you have 6 into 10 raised to the power of 23, then how much time are you going to take? ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं तो बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर दूंगा. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द advantages of teaching chemistry. I can simply pass it on to math, saying कि ये आपको maths आना चाहिए. ठीक है, so this is something that you should be able to calculate and give an answer to. If you want to be more accurate, then use 6.02 into 10 raised to the power of 23. That will give you a more accurate answer. All right, then 13th and 15th. Okay, so let's see quickly. 13th. All right, so okay, you come across such a question, you read the language of it, and then based on that you should be able to all right, माइक्रोग्राम, आई थिंक आपको माइक्रो वर्ड शायद नया लग रहा होगा. 1 microgram is equal to 10 की power minus 6 grams. ठीक है, maybe if you did not know this, then you ought to know this. ठीक है, and ये जो 10 की पावर के प्रीफिक्स होते हैं उनका आपको नॉलेज आगे भी काम आएगा. ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट जैसे इफ आई ट्राई टू write it down, so let me
use those suffix. So 10 की power 0 is 1, ठीक है. 10 की power minus 1, ठीक है. 10 की power minus 1, this is called as, इसका prefix use होता है डेसी. 10 की power minus 2 का सेंटी, मिली, ठीक है. माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है. ऐसे ही जो इंक्रीजिंग पावर होती हैं उनका भी प्रीफिक्स लगता है. सो 10 की पावर 1 इज डेका, 10 की पावर 2 इज हेक्टा या हेक्टो भी यूज होता है, ठीक है. 10 की पावर 3 इज किलो, ठीक है. 10 की पावर 6 इज मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा. देन 10 की पावर 9 इज गीगा, देन टेरा. 10 की पावर 15 is peta, and 10 की पावर 18 is exa, ठीक है. अभी जो रिसेंटली ब्लैक होल की इमेज कैप्चर करी गई थी, आप लोगों ने देखा था, नहीं देखा था? जो ब्लैक होल की इमेज अभी रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, उसका डेटा कैसे, उसके बारे में बताया था दैट ऐसे एक्साबाइट्स में डेटा कलेक्ट किया गया था, या पीटाबाइट्स में था कि एक्साबाइट में था. हाँ, 4.5 petabytes of astronomy data, which was too much of data. So yeah, anyways, these are something जो मे बी अगर आपको आज नहीं याद होंगी तो ठीक है, बट धीरे धीरे याद होनी चाहिए. एंड आपसे एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि ये प्रीफिक्स आर समथिंग दैट यू आर एबल टू रिमेंबर, ठीक है. सो लेट मी पुट देम इन द साइड, ठीक है. आप बीच के बीच में एकदम आ गए हैं, ओके. ऑल राइट, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. इसमें कैसा दिया हुआ है दैट 1 माइक्रोग्राम है कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? सो दैट्स इट. मास इज 10 की पावर minus 6 gram, so moles will be equal to 10 की पावर minus 6 upon 12, and number of carbon atoms should be equal to 10 की power minus 6 by 12 into n, into Avogadro's number. So you do that calculation and you should be able to then get the answer, ठीक है. All right, then 15th क्वेश्चन भी पूछा था आपने आयुर. 15th क्वेश्चन में कैसा था? अ सैंपल ऑफ पोटैटो स्टार्च, ओके. तो वापस से खूब सारा लैंग्वेज है क्वेश्चन का. अभी मतलब ठीक है, अगर आप लोगों की अंग्रेजी कमजोर होगी मेरी तरह, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, आप लोगों को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है. बट आप बॉम्बे के हो, सब बचपन से इंग्लिश बोलते आ रहे हो. मतलब मेरी बिल्डिंग की सोसाइटी में लाइक देर आर दीज किड्स हु आर ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश ओनली, मतलब छोटे छोटे बच्चे. आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी वियर्ड इन द बिगिनिंग, अब तो खैर मुझे भी आदत हो गई है. बट देन दी स्मॉल किड्स लाइक, मतलब आई डोंट नो, उनकी एज में तो मुझे इंग्लिश का मतलब ये भी नहीं आता होगा. एंड देन दे आर लाइक कम्मो या व्हाट्स योर प्रॉब्लम, एंड आई एम लाइक कि इंग्लिश नहीं, इनको एक्सेंट भी आता है और उसके साथ में इनको एटीट्यूड भी आता है. सो दैट केम एज अ big surprise to me when I started interacting with these kids in my society. So I am safely assuming कि आपको इतनी इंग्लिश आती है that you are able to comprehend these simple questions. अब इसमें कैसा है,
यहाँ पर पोटैटो स्टार्च, ग्राउंड इन अ बॉल मिल, स्टार्च मॉलिक्यूल, लोअर वेट, समथिंग समथिंग खूब सारा लिखा हुआ है. एंड इट वाज एनालाइज्ड दैट फास्फोरस वाज दिस मच परसेंटेज. ठीक है. सो एंड बोला जा रहा है इसमें जो क्रिटिकल डेटा है दैट दिस मच, ये परसेंटेज अब क्या होगा, डेफिनेटली परसेंटेज बाय वेट ही होगा. एंड बोला जा रहा है दैट देयर वाज वन एटम ऑफ फास्फोरस इन ईच मॉलिक्यूल. सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट. तो अपन ने फॉर्मूला सीखा है दैट परसेंटेज composition of element is equal to contribution in molecular weight upon molecular weight into 100%. Since there is just one atom, so the contribution is 1 into 31. Phosphorus का atomic mass इतना ही होता है, right? And this is given to you as 0.086%. So you do the calculation and get the answer to molecular weight. ठीक है? Straightforward. All right. Now, उत्सव ने पूछा है 20th question in FBS. All right, so let me see which is the 20th question. Oh, जानबूझ के पिक किया है ये तो. मुझे ऐसा लग रहा है उत्सव तुम्हें क्या नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में, इलाबोरेट करोगे. What is it that you did not grasp? Did you not grasp the concept of marijuana? Did you not grasp the concept of tetrahydrocannabinol? बताओ उत्सव. Oh, compounds didn't get. I see. Ayur also has a doubt in the same question. Yeah, I'm sure all the guys are now quite interested in understanding the question in greater details. All right, so I'll pretend that it's a very academic question and nothing interesting about it. It just talks about some compound in which there are some elements, and what we have to do based on the data is to get the molecular formula of that compound. All right, so how do we proceed with it? It has got carbon, hydrogen and oxygen atoms. ठीक है. And this is the percentage in terms of atoms. ठीक है. So ये जो भी composition दिया हुआ है वो atoms के form में ही दिया हुआ है. It is not something which is by mass. So blindly don't start applying that table data, tabular method. ठीक है. Don't blindly apply table based method as we are not given percentage composition by mass, we are given percentage composition by moles. ठीक है. So अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. So let the formula be of this nature that ऑक्सीजन के एटम्स x है तो हाइड्रोजन के एटम्स 15x हो जाएंगे. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में that there are 15 times as many hydrogen atoms as oxygen atoms. And carbon के बारे में क्या बोला जा रहा है, that 70% of how many hydrogen atoms are there. So 0.7 into 15x. ये समझ में आया. So
इतना जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे आई केम अप विद दिस. ठीक है. नाउ यू माइट कम अक्रॉस एंड से कि सर ये क्या नया सा बता दिया, आप ऐसे कैसे कोई नया सा अप्रोच यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. लाइक you should only use the approach that you have taught and how this new thing. So let me be very clear, you are always going to come across new questions, you are always going to come across new approach. You have to be able to also think on your or by yourself, you know, when you are going to answer such questions. ठीक है. That's the key difference between your previous examinations and the examination that now you are preparing for. अब मुझे क्या करना है, इसमें x डिटरमाइन करना है, एंड x डिटरमाइन करने के लिए मुझे एक और डेटा क्या दिया हुआ है, that the number of moles in 1 gram of tetrahydrocannabinol is 0.00318. ठीक है. So moles is equal to mass upon molecular weight होता है, राइट. सो मोल्स आपको दिया हुआ है 0.00318, मास दिया हुआ है 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 0.7 इंटू 15x इंटू 12, ये कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन, देन 15x हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 16x हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. This shouldn't be a big concern. ठीक है. I hope you got the answer, Utsav and Ayur. All right. Then अनु ने डाउट्स पूछे हैं 21, 24 and 25. Okay, not 21. 21 Anu has retracted. 24. All right. So 24 में भी डिस्कस कर लेते हैं. हाँ चलेगा केदार, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आंसर निकाल सकते हो. कंप्लीटली अंडरस्टैंड. ऑल राइट. सो ओके, रुद्र का है इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो x आ गया तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ना, x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ना वापस से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा ना. ठीक है. ओके. सो अनु, यू आर सेइंग दैट देयर इज अ स्लाइट कैलकुलेशन वेरिएशन. आपका आंसर 19.8 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है. इनफैक्ट आपका आंसर 22 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है, एंड पीछे आपको दिया हुआ है which is 19.8 into 10 की power 23. Okay. All right. Let's see. So alloy है यहाँ पर iron, cobalt and molybdenum, and percentage दिया हुआ है. अब कुछ नहीं दिया होता तो ये percentage कैसा रहेगा, composition of elements is by mass. ठीक है. This will be by mass. अब पूछा जा रहा है how many cobalt atoms are there in this cylinder. So यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, mass of cylinder as a whole will be volume into
density. Now volume of a cylinder is area of base into height, ठीक है, and density आपको दिया हुआ है. So 3.14 into radius 2.5 का square into length is 10 centimeter. So ये centimeter cube में हो गया है, and density is also given to you as 8.2 gram per centimeter cube. So centimeter cube and centimeter cube gets cancelled out. You'll get the value of mass in grams only. Now mass of cobalt in this is mentioned is to be 12%. So it will be 12 by 100 into this entire value, right? That's the mass of cobalt. And then number of, or you can say first moles of cobalt, right? So mass upon 58.9, and that multiplied by Na should give you the number of atoms of cobalt. You want me to double check the calculation, so that is not going to happen. This is what should yield the correct answer. अगर इससे भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है पीछे, तो फिर यही सही आंसर है, ठीक है. All right. Then 25th question. All right, let me take the 25th question. All right, ये अच्छा question है. This is worthy of a doubt. Although इसको भी हम लोग क्विक वे में कर सकते हैं. Now average molecular weight of mixture. ठीक है. This is given to you as 38.3 into 2. ठीक है. Basically it is twice of vapor density. ठीक है. Now अब observe करना, how would I want to approach this question? I am being asked the total number of moles of NO2 in 100 gram of this mixture. ठीक है. So I can start from there only, that let the moles of NO2 be equal to X, and I can say that let the moles of N2O4 be Y. So now I have two variables. Okay, that is what a mixture is made up of, and I have got two data points. Can I make two equations and solve for those equations to get the two variables? I can. So यहाँ पर observe करना, total mass should be equal to 46x plus 92y, because those are the individual molecular weights of NO2 and N2O4 respectively, and this is equal to 100. That's the first equation. Okay. And average molecular weight, which is 38.3 into 2, is total mass upon total moles. So it is 100 upon x plus y, and that is the second equation. Okay. So you have got two simultaneous equations with you, which are straightforward. 100 upon x plus
एक एक तो ये हो गया. सो आई जस्ट, अब ये आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, मतलब so you have 46x plus 92y is equal to 100. That is one equation. And you have another equation that is x plus y is equal to 100 upon 38.2 into 2. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं. सो अब सॉल्व करने का तरीका मतलब अपना अपना हो सकता है, कैसे भी आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, या आप थोड़े से अगर क्विक हो तो आप क्या करना चाहोगे, आप इसको 40x टाइम्स x प्लस वाई कॉमन ले लोगे एंड यहाँ पे 40x प्लस वाई बोलोगे, फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके y को सॉल्व कर लोगे एंड देन यू विल ऑल्सो रीसब्स्टिट्यूट टू गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो वो मैथ्स है. ठीक है, वो मैं आपको ना तो सिखाऊंगा ना ही उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा. You should struggle with this. You should struggle with this and figure out how to solve this. ठीक है, so I'll just leave my solution, or I'll leave my words of wisdom right here. Two variables, two linear equations, solve कर लेना. All right, so ये आपका FBS वाला पार्ट है. अब रुद्र का मेरे पास में आ रहा है सर 19, 20, 1, 22, 23, सारे ही क्वेश्चंस मुझसे करा रहा है. ओके, यहाँ पर 19th में एक्चुअली O मेंशन करना चाहिए था. O for oxygen, that is what potassium permanganate should have. Potassium manganate should have KMNO. KMNO4 होता है वो, या K2MNO4 होता है, बट यहाँ पे पता नहीं गलती से टाइपिंग एरर में ये P आ गया है. ठीक है, बट आई थिंक पीछे आंसर भी उसी तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, 19, 21 एंड 22. नहीं, 22 मैं नहीं सॉल्व करूंगा. ठीक है, 22 is exactly like how it is done in the class. ठीक है, exactly like a class example, just some data change. So 22 is something you should be able to do. Then 21, चलो मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ. ठीक है, I will only entertain 21, Rudra. I will not solve 19 and 22. They are exactly like class examples. Okay. So 21 में कैसा है? A given sample of xenon fluoride contains molecules of a single type XCFN where N is a whole number. ठीक है, and you have been given molecules and mass. तो इससे इन दोनों से आप क्या molecular weight निकाल सकते हो? I think you can, right? Number of molecules is known to you, 9.03 into 10 की power 20. तो इससे आप मोल्स निकाल सकते हो कैसे? 9.03 into 10 की पावर 20 अपॉन Na, राइट. देन इससे आप मास निकाल सकते हो कैसे? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट. सो यू विल हैव 0.311, that will be equal to 9.02 or 9.03 into 10 raised to the power of 20 upon 6.01 into 10 raised to the power of 23, or 6.02 you can say, into molecular weight. And
मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कितना होगा, अभी एक्सी का एटॉमिक मास इसमें लगेगा, ठीक है, एक्सी और फ्लोरीन का। तो जेनॉन का एटॉमिक मास आपको शायद नहीं आता है, बट उसका एटॉमिक मास होता है 131, ठीक है, एंड फ्लोरीन का रहता है 19, एंड क्योंकि उसके n एटम्स है, सो आई विल जस्ट पुट इट एज 131 प्लस 19n। एंड इसको अब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, तो you should be able to get the answer to what the value of n is, ठीक है। ऑल राइट, सो अच्छा, रुद्र इज सेइंग कि उसका 19th एंड 22nd क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट आई थिंक अदर स्टूडेंट्स, आर यू आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट योर आंसर डिडंट मैच फॉर 19th एंड 22? Or were you guys as lazy as me that you didn't bother to solve it till the end because देख के लगा कि आ जाएगा? Okay, so Anu is a hard working individual. अनु ने सॉल्व करा है, रुद्र आंसर मैच कर रहा है, अभी आपका कैलकुलेशन या केदार का आंसर भी मैच कर रहा है। तो अभी आपका कैलकुलेशन तो मैं नहीं ठीक कराने बैठूंगा कि देखो आपने प्लस में गलती करी, माइनस में गलती करी, मल्टीप्लाई में गलती करी, नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। ऑल राइट, सो ठीक है, एंड इवेंचुअली अगर तब भी नहीं बैठ रहा है तो कैलकुलेटर यूज करके देख लो यार, ऐसा पाप नहीं हो जाएगा आप कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो, ठीक है। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी वेरी हार्श इन कैलकुलेशन। नहीं रुद्र, इट इज नॉट पॉसिबल, आई विल नॉट सॉल्व एनी वन ऑफ देम। सही है यार, तुम अच्छे नेगोशिएटर हो, मतलब तुम सब्जी वब्जी खरीदने तुम ही जाते हो क्या घर से? भावतोल करना आता है तुमको, एकदम सारे टैक्टिक्स सीखे हुए हैं तुमने। ऐसा करें, सर को 5 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसमें से एक तो कर ही देंगे। तुम मुझे, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तुम मुझे क्लास वर्क दे रहे हो। ऑल राइट, सो हम लोगों ने FBS देख लिया है मैंने, और क्या क्या सेक्शन दिया था? अच्छा, मैंने गेट इक्विप टू मेंस एंड गेट इक्विप टू एडवांस भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग गेट इक्विप टू मेंस भी एक बार देख लेते हैं। ऑल राइट, सो गेट इक्विप टू मेंस में बताओ, गेट इक्विप टू मेंस तो आई थिंक इनके बीच में है। विच क्वेश्चंस? 15th क्वेश्चन, ओके। 15th question in get equipped to mains is okay, so I think इसमें आप ग्राम एटम वर्ड में कंफ्यूज होगे। ग्राम एटम इज दैट G hyphen atom, okay. ठीक है, तो एक्चुअली मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पर आप नोटिस करना 0.05 ग्राम एटम्स मीन्स 0.05 मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द नंबर ऑफ एटम्स आर। सो यहाँ पे आप जब एडिशन करोगे तो टोटल एटम्स दो 200 आर हाइड्रोजन, देन 0.05 into Na, एंड देन 10 की पावर -20 into Na, ठीक है। वो भी ग्राम एटम ही लिखा हुआ है, ये दोनों ग्राम एटम है। ग्राम एटम का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ग्राम एटम, सॉरी, ग्राम एटम का मतलब होगा मोल्स ऑफ एटम। सो यू हैव मोल्स, तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब द थिंग इज दैट दिस एंड दिस विल बी नेग्लिजिबल,
this and this is negligible. So your answer essentially comes very close to 0.05 Na, which comes around 3 into 10 raised to the power of 22. ठीक है, वैसे भी आपसे अप्रोक्सीमेट ही पूछा ना, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, all right, any other question in get equipped to mains? $30 and $31. All right, so 30 में कैसा रहेगा? ऑब्जर्व करना. 30 में you have अभी यहाँ पर देखना ना, जो परसेंटेज दिया होगा आइसोटोप्स के केस में, दिस इज ऑलवेज परसेंटेज बाय नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, दैट एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, जो आइसोटोप्स का रहेगा, विल बी परसेंटेज abundance multiplied by atomic weight plus percentage abundance multiplied by atomic weight. ठीक है, ये आप आइसोटोप 1 के लिए करोगे, आइसोटोप 2 के लिए करोगे एंड करते जाओगे. सो यहाँ पर ठीक है, आपको बोला जा रहा है 90%, सो 90 by 100 into 20. ठीक है, देन 10 minus x, क्योंकि टोटल 100 होगा ना, सो 10 माइनस, और इनफैक्ट आपको x तो इसी का निकालना है 21 का, सो इसको मैं x बोल देता हूँ. ठीक है, लेट x बी द परसेंटेज, सो x by 100 into 21 एंड देन बचा हुआ होगा 10 minus x%, so 10 minus x by 100 into 22. this should be equal to 20.11. यहाँ से आप x सॉल्व कर लोगे. ठीक है, 100 कॉमन लो, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, and then it should be a fairly simple calculation. ठीक है, this formula that we have written here is a simplified version of our generalized formula, that is average atomic mass is total mass upon total moles. हाँ, तो अगर बाय वेट दिया होता ना, had it been something that was given by weight, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, that उस केस में you will then have to you know abandon this formula, इस formula को directly मत use करना. Then you should start by saying कि okay, let the total mass be 100 and based on that percentage you distribute the mass into each isotope, and then हर isotope का आप moles निकालो, और फिर सबके moles को add कर दोगे तो total moles आ जाएंगे. And then use the generalized formula that average atomic mass is total mass upon total moles. Total mass was something that you assumed as 100, and then total moles will be based on what you had calculated. All right, then 31 is something जो मैं orally कर देता हूँ. See, यहाँ पर कैसा रहेगा, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, वो वेटेड एवरेज होता है. सो अगर दो आइसोटोप हैं 16 और 18, और अगर दोनों 50-50% होंगे, तो द वेटेड एवरेज विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू. ठीक है, बट अगर वो 18 का परसेंटेज ज़्यादा है, वो 16 का कम है, तो द फाइनल आंसर विल बी क्लोजर टू 16 than to will be closer to 18 than to 16. ठीक है,
So this is something which you will have to come across when you are solving such questions. ठीक है. All right. Then get equipped to mains में और कोई question which you would want to ask based on the homework that I had given? If not, then we can move on to get equipped to advanced. All right. Any questions in get equipped to advanced section? 2, 6, and 17. Okay. Okay. Let me handle the second question first. Okay, so the second question goes in this manner that there are two flasks of equal volume and equal pressure and equal temperature. So by PV is equal to nRT, if PV and T is same, so this implies moles should be same. ठीक है? And moles क्या होंगे? Mass upon atomic mass या molecular mass. So mass of A upon molecular weight of A should be equal to mass of B upon molecular weight of B, right? So if the weight was found to be 0.8 grams, while this was found to be 1.4 grams, okay, what will be the weight of one molecule of B compared to one molecule of A? So that is simply asking molecular weight of B upon molecular weight of A, which will be equal to 0.8 upon 1 by 4, which is roughly 0.57, right? So it should be this option, C option. Okay. All right, then 6 and 17. Okay, so sixth wala is also a good question. Sixth wale mein let me see. डाइatomic गैस दिया है, ठीक है, एंड आपसे वेट ऑफ वन एटम पूछा हुआ है. ओके, सो बाय पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा गड़बड़ ये है दैट व्हाट दे आर आस्किंग इज दैट द वेट ऑफ वन एटम in grams. They should have specified this in the question, that they are asking the weight of one atom in grams. Okay, so यहाँ पर अगर आप PV is equal to nRT यूज करोगे and moles को आप लिख दोगे mass upon molecular weight into RT, so you will end up with 2 into 350 upon 1000. ठीक है,
because this is supposed to be in ATM, this is supposed to be in liter. ठीक है, mass is 1 divided by molecular weight into R का value 0.0821, ठीक है, ATM liter per mole Kelvin, and temperature should always be in Kelvin, that is 273, ठीक है. So that is where you will get your answer of molecular weight. ठीक है, ये ATM कटेगा, लीटर भी कटेगा, ठीक है, मोल भी कटेगा, ग्राम भी कटेगा, एंड केल्विन भी कट जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिलेगा. ठीक है, नाउ आई थिंक इफ यू विल सॉल्व फॉर इट, सो इट शुड कम आउट टू बी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा. Oops. Divide by 2, divide by 0.350, it comes out to be 32. ठीक है, now that 32 is actually molecular weight of gas, and that gas is something which is diatomic. ठीक है, अब आप इसको ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो या फिर 32 AMU भी बोल सकते हो. So mass of one molecule is actually 32 AMU. ठीक है, so the mass of one atom will be equal to 16 AMU, which is actually 16 upon Na grams. ठीक है, हाँ, तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया सोल्यूशन. अब कुछ आप लोगों ने मैसेज डाला है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक. सो द प्रेशर इज गिवन एज 2 atm. यस, तो आई अप्लाइड 2 atm ना. I didn't use the 22.4 value, I used the entire ideal gas equation only. Okay, so your question is something which I do not understand, like how much, maybe 30%, 40%. All right, then अच्छा, next क्या डाउट पूछा है आपने? Let me scroll back up. 17th. Okay, so 17th question. All right, so maybe you did not know what angstrom is, what that A symbol is. ठीक है, I'll help you with that also. That is also something जो आ जाता है समझ में, but only after atomic structure chapter. ठीक है, आप लोग जब atomic structure chapter पढ़ोगे तो उसमें you will be able to get a idea about it. 1 angstrom, ठीक है, इसको angstrom बोलते हैं, is 10 raised to the power of -10 meters. ठीक है, 1 micron, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, is 10 की पावर -6 मीटर. ठीक है, सो अब यहाँ पर कैसा है, एक बड़ा ऑयल का पार्टिकल है, उससे छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं, तो कितने ड्रॉप्स बन सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे यहाँ का टोटल मास शुड बी यहाँ का टोटल मास. नाउ मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू देयर इंडिविजुअल वॉल्यूम एंड डेंसिटी. अब डेंसिटी तो दोनों तरफ सेम है, तो इट विल बी नॉट समथिंग विच चेंजेस.
यहाँ पे बड़ा वाले का क्या आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना बोला है यहाँ पर 2 माइक्रॉन्स, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब। एंड यहाँ पर कोलॉइडल ऑयल पार्टिकल्स हैं which are 20 angstrom in radius, so this will be 4/3 pi into कितना 20 angstrom, okay 20 into 10⁻⁻10 का क्यूब। ये 4/3 पाई भी कट जाएगा एंड थोड़ा सिंप्लीफाई करके गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, shouldn't be a problem। ओके अच्छा, देन रावी का भी कोई एक डाउट था which was fifth question। Okay, let me come back to the fifth question। Oh, so it's on the same lines, no, how it happened। So इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि यूनिट्स यहाँ पे ग्राम्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, सो ये फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही लाइंस पर है। शुड आई डू इट, हो जाएगा ना अभी आपसे अभी, मतलब दिस इज एग्जैक्टली एज सिक्स्थ ओनली। You use PV is equal to nRT equation, you determine the molecular mass। ठीक है, बट वो क्या हो जाएगा, एक ट्राई एटॉमिक गैस का हो जाएगा, तो सिंगल एटम का मास कितना होगा 1/3 ऑफ दैट मोलिकुलर वेट। एंड जो मास आप निकालोगे, ठीक है, वो AMU में होगा, तो यू जस्ट डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, ऑलराइट, सो या आई थिंक दीज वर द क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिए थे फ्रॉम द होमवर्क। ठीक है, नाउ what we can do is actually come back to the assignment। आप लोगों ने असाइनमेंट ट्राई करा है, तो असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल आपको स्ट्राइक हुए हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा अभी, बट पार्शली ट्राई करो। अच्छा सानिध्य, यू आर गेटिंग द आंसर्स, तो ठीक है ना, आंसर की तो मैंने नीचे दे रखा है सानिध्य, या आंसर की यहाँ एंड में है, तो आप मैच कर सकते हो अपने आंसर्स। ठीक है, अच्छा, what I can do is मे बी लेट स्टूडेंट्स, ठीक है, अबव एवरेज डिफिकल्टी है, इजी नहीं है, तो आप लोग ट्राई करो। और पर्टिकुलरली अगर किसी को कोई डाउट आया है तो वो आप पूछ सकते हो, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो सानिध्य हैड अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फिर देन लेट अदर्स आल्सो टेक एन अटेम्प्ट एट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, let me give a chance to others also। Let's wait for a couple of minutes, बाकी लोग भी देखेंगे क्या रहेगा कैसा रहेगा, and then we'll discuss। ठीक है, सो आज की क्लास में एक्चुअली मैंने डेलिबरेटली इस तरीके से डाउट्स एंड ऑल डिस्कस करे हैं, बिकॉज आई wanted to stress on the point that अगर हम लोग क्लास की टाइमिंग्स में डाउट्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे ना, तो it will take up a lot of our time। ठीक है, now since we have got an opportunity to study online, so we should rather use this time most to cover newer concepts and newer examples। and जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, that will be more than sufficient to solve these doubts।
अगर उसके अलावा फिर भी आप कहीं पे अटकते हो तो ठीक है, देन आप अलग से मुझसे पूछो ना, ग्रुप पे पूछो, डिस्कस करो, विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अ मोर एफिशिएंट मैनर. ठीक है. So I'll continue sharing the video explanations only for the upcoming homework that I'm going to give you, and based on that आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन डाउट सॉल्विंग वीडियोस को देखो, समझो. ठीक है. एंड skip to particular doubt that you have and check it out quickly. बट ऐसा नहीं है कि ठीक है आपको फटाफट एक्सेस है तो आप क्या फटाफट गिव अप मत मारना. मतलब सी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. मतलब आइडियली स्पीकिंग I would not want to give you the solutions, because the purpose is not for you to copy and you know ensure कि completeness हो गई है. ठीक है. because अभी कैसा है, मैं तो घर आके आपके चेक नहीं कर सकता कि आप कितना honestly homework कर रहे हो. So it is up to you only to maintain that honesty and ensure that you are learning maximum out of this. ठीक है. So make sure that you take this into account and utilize your time to the best. All right, so I think सबने question पढ़ लिया है. ठीक है. And maybe you have started to work on it as well. ठीक है. Let me also see. हम इसको कैसे करेंगे. All right, so let me shrink it a bit. Okay, so NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. According to an industry convention, the numbers on the label refers to the mass percent of nitrogen, P2O5 and K2O in that order. ठीक है. So they're asking what is the NPK ratio of a 30-10-10 fertilizer in terms of moles of each compound. ठीक है. So यहाँ पर आपका फर्टिलाइजर है. ठीक है. इसमें 30-10-10 लेबल है. ठीक है. And what these mean are the mass percent. ठीक है. तो मान लो if this total is 100 grams. ठीक है. You want to assume a variable, be my guest, कोई problem नहीं है. You can assume a variable or you can assume a value also, because question does not contain any hard data. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन में हार्ड डेटा नहीं है, सब रेशियोज में ही डील हो रहा है. तो आप वेरिएबल भी मान सकते हो, आप वैल्यू भी मान सकते हो. So now what does this mean? That mass of nitrogen is 30 grams. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में लिख लेता हूँ. Mass of nitrogen is 30 grams. So moles of nitrogen will be 30 upon 14. ठीक है. Mass of P2O5 is equal to 10 grams. ठीक है. So moles of P2O5 will be 10 divided by the molecular weight. The molecular weight should be 2 times 31, that is 62,
plus 5 into 16, that is 80. So 62 plus 80 should be 142. Okay. So moles of potassium should be twice of this, 2 into 10 upon 142. Similarly, this 10 means that the mass of K2O is 10 grams. Okay. So moles of K2O should now be mass divided by the molecular mass. So 10 divided by this comes out to be 39 into 2, that is 78. 78 plus 16 should be 94, है ना? एंड इससे मोल्स ऑफ पोटेशियम आ जाएंगे आपके. मोल्स ऑफ पोटेशियम कम आउट टू बी 10 by 94 into 2, and that is what you have to do now. Write the moles of each element expressed as x, y, and 1. So 30 by 14 is to 2 into 10 by 142 is to 2 into 10 by 94. तो अब आप इसको अगर 1 बनाना चाहते हो तो बाकियों को फिर आप इसी से अब मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, वाई डिड आई मल्टीप्लाई बाय 2? बिकॉज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोटेशियम के एटम्स हैं, 2 फॉस्फोरस के एटम्स हैं. तो जितने लॉजिक लगाना पड़ा ना उसके बाद कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो जितने मोल्स होंगे उसके 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे ना. समझ में आया रुद्र? राइट. सो ये आपका रेशियो हो जाएगा, एंड नाउ यू मैच इट विद विच एवर ऑप्शन suits the best. That's your answer. ठीक है. So I think A option suitable लग रहा है तो. All right. ठीक है. सो देन आई थिंक इसका मैंने एक्चुअली एक वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रखा है. ठीक है. So what I'll do is today after the class I will share the video explanation of this assignment as well. ठीक है. You guys can continue working on this, and then in the next class we'll start with the next topic. ठीक है. तो मैं आज के लिए आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. मतलब योर होमवर्क इज बेसिकली दिस असाइनमेंट ओनली. It's a difficult one and would require you to gain expertise to solve this question. तो अगर आप इसमें स्ट्रगल भी कर रहे हो तो दैट्स ओके. ठीक है. सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है. लेट्स क्लोज द सेशन टुडे slightly earlier only, but let's keep the next topic fresh topic for next class. हाँ अनु पूछो ना. Okay, so yeah, I get that question many times. I get that question because generally it is not expected that once you clear IIT, then how did you land up into coaching and teaching students? So it's a different story,
and I'll give you a quick snapshot of it. I didn't plan on ending up teaching, and neither this is something which is final also for me. So when I was in campus, I got placed into Ernst and Young EY. It's a company जिसके business consulting arm में. It's a primarily taxation and audit based company, but I went into the consulting division of it. I was working there for a long time, almost 3 years, a quarter short of 3 years, and then I decided to actually, you know, start a company with my college seniors. It was an online education space only, so I was quite interested in the education industry, and it was an edtech company, and we were working on it, but unfortunately, the funding didn't go through. We had one round, but then it didn't suffice, and the savings got depleted and all. So then I started teaching in order to like have some bank balance with me. I didn't want to borrow from my parents. So, and that is where then I started teaching, and actually I liked it. I didn't realize at that point in time, but yeah, I that enjoyed, and then I stuck to it. So it has been something which I've been enjoying for past, I think now good 4 years. Yeah, I joined Pace in 2016. अभी 2020 हो गया है. So yeah, so it was not planned or something, and अभी हो सकता है अभी और चीजें चेंज हो रही हैं, so you never know how things shape up. आयुर, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया. Like, is it filled with sarcasm, or is it something that you are genuinely trying to understand, because we haven't really done much yet? All right, then great. Matlab, we will work towards it. Make sure that works well for you. All right, then. So, okay, Anu is like, may you get a good job after 2 years. I do have options of changing my field, getting into another job and all. It's something that I like, so I am sticking around. It's not that I am not looking, but yeah, abhi jis tarike se the situations are changing, the turbulence is there, so I might have to adapt. I might have to look at another way of approaching this particular situation. Oh, okay. So, okay, I didn't get that. I thought you are being, say, empathetic. Not, I should not say empathetic. You are being sympathetic to my situation. Completely misunderstood that. Any which ways. So, ऐसा नहीं होगा अनु. I will not be teaching you for a complete 2 years. I'll be only taking physical chemistry का part. आपका organic, inorganic chemistry will be taken care by other teachers, because I only take physical chemistry. And but ठीक है, ऐसा नहीं है that you will come across many good teachers in pace, and you will start enjoying the process. It would have been much more fun. मतलब actually classes, live classes are actually much more fun. One of the reasons why I actually enjoyed teaching was because of the fact that you guys are in an age where you appreciate and understand sarcasm. तो मैं क्लास में 2-3 बच्चों को, तो अगर रुद्र अभी ऑनलाइन क्लास में, तो तुम बचे हुए हो रुद्र, मतलब तुम अगर ऑफलाइन क्लास में होते, तो वी वुड हैव बिकम रियली गुड फ्रेंड्स. तो
तुम्हें पता भी नहीं पड़ता, but we would have good time. We would have had good time. Any which ways. Okay, coming back to Kedar's question, he wanted to understand which book to go for right now. Well, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो अभी मैं आपको assignments and all दूंगा तो आप उससे practice कर सकते हो. But if you want to actually go ahead and buy a book, तो आप ये नरेंद्र अवस्थी का book ले सकते हो. It's a good book filled with good questions. और भी बहुत सारे बुक रहेंगे, ठीक है. अभी आप धीरे धीरे इवॉल्व करोगे, मतलब अभी आई वुड नॉट रिकमेंड कि गो एड एंड बाय अ बुक. थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है. इन अ मंथ और सो टाइम यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है. एंड यू विल गेट फीडबैक फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड देयर विल बी मल्टीपल गुड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है. तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो. ऑल राइट, देन there is a question from Ayur. Good at theoretical part but not sums. तो ठीक है ना आयुर, हम लोग उसी के ऊपर वर्क करेंगे. रुद्र, how much time does it take to study the whole syllabus of JEE? यार रुद्र, मतलब I am amazed at your questions. अभी which units do you want the time in? Seconds, milliseconds, microseconds, वो भी बता देते हैं. Any which ways. Then you want to study quantum theory ना, मतलब हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे टू अ बेसिक एक्सटेंट व्हेन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है, ठीक है. एनीवेज आई थिंक आप लोगों का तीसरा लेक्चर है. यू आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड नाउ, डन फॉर द डे. हैव योर डिनर, स्लीप वेल, स्टार्ट फ्रेश टुमारो, वर्क ऑन दिस असाइनमेंट. इट्स अ गुड असाइनमेंट. थोड़े से मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस हैं, एंड देन विल pick up a next topic in the next class. All right, chalo, take care guys, bye bye.